So सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि there are no coincidences. Whatever happens in Guruji's Darbar is part of his plan, his will, his design, and it is orchestrated by him. So, when I connected with Guruji in late 90s, and I shouldn't say I connected, I should say जब मेरी रूह को गुरुजी ने बुलावा दिया अपने दरबार में आने के लिए, तो I was in college, and as such life में कोई problem नहीं थी. It's not that, I was battling something in life and I needed, some support system. He knows जब वक्त और घड़ी बराबर होता है तब गुरुजी अपने दरबार में बुलावा देते हैं और हमेशा कोई जरिया बनता है. So in my case, my vessels that brought me to Guruji's Darbar were my parents, because they went a night prior to me and my sister going. तो एक रात पहले मम्मी पापा गए थे और उसके बाद when they came back really happy, and my mom is a sugar patient. तो उनको गुरुजी ने खूब मिठाई दी उस दिन, जलेबी, अमृति, समोसा, मतलब साइंस के रेल्म में आप जिसको डिजास्टर रेसिपी बोलते हो वो सब गुरुजी ने खिलाया. And obviously being new in Guruji's Darbar, there was a lot of hesitation कि oh my god अब क्या होगा, जाकर शुगर टेस्ट कर लेते हैं just to see everything is okay. And sure enough, गुरुजी को साइंस और लॉजिक को फेल करने में बहुत मजा आता था. And I think इसी तरीके से वो हमारे विश्वास को हासिल करते हैं. And गुरुजी would say कि कलयुग में रब मिलना बड़ा आसान है. And it is the Rab that needs to prove himself or herself to his devotees, and not otherwise. And all of us, knowingly, unknowingly, come with, certain conditions, certain, I would say कि वो dilemma नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम ठीक जगह पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे. और जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम कभी शिवजी के आगे ये कंडीशन नहीं लगाते कि शिवजी आप प्रूव करो कि आप शिवजी हो तब मैं आपकी मंदिर की घंटी बजाऊंगा. बट विद गुरुजी वी कम विद एक्सपेक्टेशंस एंड वी कम विद कंडीशंस, एंड सो इज हिज ह्यूमिलिटी कि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहते हैं अपनी संगत के लिए. सो एनीवे, ये लोग घर आए, मॉम ने अपनी शुगर चेक करी एंड हर शुगर लेवल्स वर बेटर देन नॉर्मल. नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? यहां तो गुरुजी ने आते ही साइंस को फेल कर दिया. कोई डॉक्टर ये फिनोमिना नहीं समझा सकता कि ये कैसे हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा. सो तब भी ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो इफ्स, बट्स, डाउट्स भरे होते हैं. वी आर कंडीशन्ड. सो माय डैड सेड कि हो सकता है तेरी ये शुगर की मशीन खराब हो गई हो, तो अगले दिन हॉस्पिटल से चेक कराना. सो नेक्स्ट डे दे वेंट एंड गॉट हर शुगर की रीडिंग डन एंड इट वाज नॉर्मल. So that was sort of, game changing कि ये कैसे हुआ. And also the previous night, Guruji, when he asked my dad कि आप पहले क्यों नहीं आए, and पापा said कि गुरुजी अब आ गया हूँ तो अब पूरी कसर निकाल लूंगा. And then Guruji smiled at him and he said कि आप पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका बुलावा नहीं था, और basically alluding to the fact कि यहाँ पर मेरे बुलावे के बगैर कोई नहीं आ सकता. And then he said कि अपने बच्चों को लेकर आना. He asked about कितने बच्चे हैं, and my dad said, I have 2 daughters, Pooja and Aarti, and he said bring them the next day. So I set my foot into Guru's Darbar, not because I really wanted to see Guruji, but I wanted to please my parents कि अगर मम्मी पापा कह रहे हैं कि गुरुजी के जाना है तो चल के देखते हैं क्या जगह है. And Sangat ji, believe you me, we don't come into Guruji's Darbar as a family. We come as individual souls. हमारी रूह का 1-to-1 नाता होता है. और परिवार में अगर 4 जने हैं तो all those people will connect with Guruji at a different level. हर एक का connection अलग होएगा. And when I came, to Guruji, I saw this, radiant man sitting on this beautiful red color की chair. Empire State की बात है. खूबसूरत सा रोब गुरुजी ने पहना हुआ था, खूबसूरत चोला, और इतना नूर था चेहरे पे कि मुझे ऐसे लगा, वो लाल कार्पेट, लाल कुर्सी और आसपास आंटियां, कोई कंधा दबा रही है, कोई पैर दबा रही है. मुझे लगा कि मैं तो इंद्रलोक में आ गई हूं. एंड गुरुजी बहुत स्माइल कर कर अच्छे से हर एक संगत को जब संगत मत्था टेकती थी तो गुरुजी ग्रीट करते थे.
नमस्ते करके। तो बहुत बहुत फील गुड फैक्टर था वो, होता है ना वो इंस्टेंट मैग्नेटिक पुल, दैट अट्रैक्शन। मेरे को वो हो गया था, मतलब समझ नहीं आई थी कि हो क्या रहा है, बट इतना समझ आ गई थी कि देयर इज अ फील गुड फैक्टर अबाउट दिस प्लेस। और हम वहां जाकर बैठ गए। गुरुजी ने नाम वगैरह पूछा, एंड देन ही अशर्ड अस टू सिट। उस टाइम भीड़ नहीं होती थी ज्यादा। थोड़ी देर में प्रसाद आया। प्रसाद गुरुजी ने एक हाथ से दिया, जो हमारे दोनों हाथों में फिट नहीं आया। हमने वो खत्म किया, हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर सिग्नल करके बुलाया, फिर से प्रसाद दिया। दिस टाइम इट वाज समथिंग डिफरेंट। और ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ऐसे हम खा कैसे पाएंगे। एंड देन वी थॉट कि चलो जो नहीं खाया जा रहा ना, वो पर्स में डालकर घर ले जाते हैं। सो देन एन आंटी सेड कि नहीं, गुरुजी का प्रसाद है, यहां खाओ तो दवाई और घर लेकर जाओ तो मिठाई। तो अगर गुरुजी ने आपको दिया है तो प्लीज ट्राई टू फिनिश इट हियर। Now, there was no guidebook, there were no sermons, there was no discourse, there was no protocol. जो भी आप देखते थे, वो जो भी आप सीखते थे, वो आपस में एक दूसरे को देखकर या सेवादार से पूछकर सीखते थे, क्योंकि गुरुजी कोई भाषण नहीं देते थे। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि वो एक प्रैक्टिकल गुरु है, एंड श्योर इनफ वो जो भी सिखाते थे, जो भी कहते थे, वो करके दिखाते थे। थियोरी नहीं होती थी, ज्यादा प्रैक्टिकल होता था। सो कुछ ऑब्जर्वेशंस, बहुत सिंपल फॉर्मेट था गुरुजी का, और आज तक हम वही फॉलो करते हैं कि आप जाओ गुरुजी के पास, मत्था टेको, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, ध्यान लगाने की कोशिश करो। शब्द कीर्तन चलता है, बानी चलती है, वो सुनो। अगर समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आती थी पंजाबी बैक देन। अभी भी बोल नहीं पाती, पर समझ लेती हूँ। वो सुनते रहो। और दैट बानी, दैट शब्द कीर्तन इज एक्चुअली फूड फॉर योर सोल। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई जवाब चल रहा है, तो आपको किसी से कुछ कहने की, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। You will surprisingly get answers from that Shabad Kirtan being played, right? And जो प्रसाद वहां मिलता है, that is Guruji's divine prasad, that is medicine for your body, because हमारी human body क्या है, एक complex machine है। हमें नहीं पता कि हमारे शरीर में किस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा पुर्जा ढीला हो रहा है। And Guruji, would X-ray, would scan your body, and वो जो आपको मिठाई दे रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए दवाई है, तो उसको पूरी तरह से खाइए। और तीसरी चीज, जो लंगर मिलता था, दैट्स एक्चुअली फूड। आई टॉक्ड अबाउट लंगर, आई टॉक्ड अबाउट बानी, एंड सत्संग। द थर्ड थिंग इज सत्संग। सो गुरुजी कभी कभी वहां पर सत्संग करवाते थे। अब शुरू में ये बहुत अजीब लगता था कि अगर गुरुजी ने किसी का कोई ट्रीटमेंट किया है या किसी का कल्याण किया है, सो where is the need to publicize this? Why are people being asked to share some of the most intimate satsangs about themselves? I would hear some aunties talk about the fact that हमारे पास यूट्रस नहीं था और हमें गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया। तो मेरे को वो समझ छोटी होती है, वो लिमिटेड होती है, तो मेरे को तब समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। वो आज समझ में आया है कि गुरु महाराज को हमारी मार्केटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। He doesn't need our marketing. वो हमें सत्संग इसलिए करने को कहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में पता चल सके और वो गुरुजी का फायदा उठा सकें। गुरुजी would say कि मैं बहती हुई गंगा हूं, जितने लोगों को मेरे बारे में बता सकते हो बताओ, एंड मैंने चले जाना है। और हमें लगता था कि गुरुजी दिल्ली में है, ही मीन्स चले जाना है, इसका मतलब पंजाब चले जाएंगे। So he would say, संगत को लेकर आओ, संगत को लेकर आओ। So keep this in mind, even today, just because we have found something invaluable, a priceless, loving guru, make sure we tell everybody around us about this phenomena, so that, just the way we are benefiting from this connection, everybody else around us should benefit too. So this was the overall format. Now इस format को देखते हुए, while बहुत मजा आता था, but काफी सवाल एज अ टीनेजर मेरे दिमाग में उठते थे कि एक तो मैंने एड्रेस किया कि सत्संग क्यों करते हैं। वो आज समझ आया कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण। दूसरा, व्हाई डू दीज आंटीज प्रेस हैंड्स एंड फीट गुरुजी के। सो उसका, और ये सब सवाल मैंने घर में जाकर भी किसी से शेयर नहीं किए।
किसी से कुछ नहीं पूछा, पर गुरुजी जानी जान है, ही इज अ माइंड रीडर, एंड हाउ ही वुड आंसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें आपका जवाब मिल जाएगा. सो उसका भी पता ये चला कि जब गुरुजी हमें पाँव घुटने को कहते हैं या हाथ दबाने को कहते हैं, तो वो हमारा कल्याण कर रहे हैं. I would hear satsangs ke, an auntie said, when I walked into Guruji's darbar, I had such an excruciating headache. इतनी मेरे को सर में दर्द थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था. And Guruji then called her and he said कि मेरे temples मसाज कर. And वो हम लोगों का दर्द, हम लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. सो हमें हमारे पेन से रिलीव करने के लिए ही वुड गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी. जब हमें वो दरबार में डांस भी करने को कहते थे, तो वो हमारी बॉडी का स्कैन कर लेते थे और ही वुड रिलीव अस ऑफ ailments known and unknown. And with these, with my own eyes, as practical, as pragmatic I might believe I am, I have seen Guruji literally transform people. Cases जो बिल्कुल, I used to see an auntie जो बिल्कुल walk नहीं कर पाती थी, and she had the best resources available to her. I mean, कौन सा दुनिया का डॉक्टर था जो उनके beck and call पे available नहीं था, कौन सी दवाई थी जो probably जिसका access उनके पास नहीं था. And when all else fails, that's when Guru Maharaj comes in. So let me tell you, Sangat ji, this is the best darbar possible, and we may or may not realize, but being here, we are extremely fortunate because Guruji chose each one of us, our soul, to be under his protective fold. So, मेरा faith पढ़ना शुरू हुआ जब मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था कॉलेज में, और मतलब अकाउंट्स में मैं अच्छी थी, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ी ऐसी थी. सो अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर था, मैं छुट्टी लेने लगी गुरुजी से, तो मैंने मत्था टेक के गुरुजी को कहा, ऐसा गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. सो ही लुक्ड एट मी, एंड गुरुजी वाज वेरी वेल educated, a very learned guru. So he started asking me questions on elasticity, supply demand, और एक क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, और जिससे पहले मैं जवाब देती उनका दूसरा क्वेश्चन आ जाता, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता. तो आई वाज लाइक, आई सेड इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग माय आंसर्स, वो मुझसे पूछ क्यों रहे हैं. सो एक आंटी उनको दबा रही थी पास में बैठकर, एंड शी सेड, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं. So I was like, wow, मेरी तो आंखें खुल गई. So instantly मेरे को लगा सर इस जगह में सिर्फ बीमार लोग ठीक नहीं होते, यहाँ तो स्टूडेंट्स का भी कल्याण होता है. So anyway, मैंने वो क्वेश्चंस को फटाफट मैंने नोट किया और घर जाके मैंने पढ़ा, एंड श्योर इनफ नेक्स्ट डे एग्जाम में वही क्वेश्चंस, एंड आई पास्ड माय इकोनॉमिक्स विद डिस्टिंक्शन, व्हिच वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी. एंड दैट्स व्हेन दिस लिटिल इंसिडेंट, कहते हैं ना कि तुम किसी को 24 घंटे भी सुनते रहो कि ओ ये बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है, जब तक आप खुद उस एलिक्सर को, उस अमृत को, उस एक्सपीरियंस को आप महसूस नहीं करोगे, आपका विश्वास नहीं बनेगा. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय गुरु डिड फॉर मी. सो ऐसे ही लाइफ चलती गई, एंड एक रूटीन सा बन गया, अनस्पोकन रूटीन के हर रोज कॉलेज के बाद एंड डैड को ऑफिस के बाद हमने गुरुजी के पास जाना ही जाना है. जितने मर्जी आप थके होते थे, पर शाम के 7 बजते थे तो वो खिंच सी नहीं होती थी, एंड यू वुड फाइंड योरसेल्फ सिटिंग इन गुरुजी's दरबार, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ऑरा कि ऐसा लगता था that while you're sitting there, you're protected from it's the same world, it's the same life, it's the same individual, it's the same mindset. What has changed, right? But while you're there, ऐसे लगता था you are protected from the rest of the world, और जैसे कोई लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपको छू ही नहीं सकती, इतना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर होता था. सो लाइफ चलती गई. एक दिन मैं कॉलेज में थी तो गुरुजी का फोन आता है, एंड दैट डे आई हैड माय डैड सेल फोन. तो ये एमिटी की बात है. आई वाज डूइंग माय MBA, एंड हम बाहर कैंपस में टहल रहे थे. आई वाज वॉकिंग विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स. सो द फोन रिंग्स एंड आई पिक्ड इट अप, और गुरुजी की बहुत यूनिक पिक्यूलियर सी आवाज होती थी. अगर जिसने भी गुरुजी की आवाज सुनी है, वो गुरुजी की आवाज को कभी भूल ही नहीं सकता. सो मैंने फोन उठाया और वहां से पंजाबी में आवाज आती है, और फिर की कर रही हैं? तो मैंने कहा, ओ गुरुजी,
And I looked around and I started walking ahead of my friends because I thought, oh my God, this is so embarrassing. What are they going to think? Again, वही छोटी सोच, right? I said, what are my friends going to think? कि इसको गुरु लोग फोन करते हैं. So मैं थोड़ा आगे चलने लगी and फटाफट before गुरुजी could say anything, मैंने बोला, I said, गुरुजी, आज पापा का फोन मेरे पास है. And he repeated. He said, तो आज डैडी द फोन तेरे कोल है. And again, as if he didn't know. हम उनको क्या बताएंगे? He repeated. He said, आज डैडी दा फोन तेरे कोल है. I said, हाँ जी गुरुजी. He said, अच्छा तो शामी आ जाए. मैं कहा ठीक है गुरुजी. ते डैडी नू नाल लेकर आए. हाँ जी गुरुजी. ते मम्मी नू घर छड़ के आई. हाँ जी गुरुजी. मैंने फटाफट हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके फोन रख दिया ना. उस टाइम पर 7 days का एक्सेस खत्म हो चुका था एंड गुरुजी दर्शन देते थे 4 दिन out of 7 days. And some people were assigned days, but we had access to all 4 days. But that was a non संगत day. So मैं घर गई. मैं कॉलेज से मैंने डैड को पिक किया कनॉट प्लेस से और फिर मैंने पापा को बोला, ऐसा पापा आज गुरुजी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है. So हम घर गए. We started to get ready, freshen up होने लगे. तो मम्मा ने हमें देखा तो मम्मा भी फटाफट रेडी होने लग गई. So I told mom, ऐसे नहीं, आपको गुरुजी ने घर पे रहने को बोला है. तो she was disappointed, but जो गुरुजी का हुक्म वो तो पत्थर की लकीर है. So हम लोग गए और हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट दरबार पहुंच गए. और I think it was a Tuesday, I don't remember, but बहुत कम लोग थे. सिर्फ आई थिंक जोशी अंकल थे, सुदामा जी थे, या दैट्स ऑल. और गुरुजी अपने कमरे में बैठे हुए थे. तो हम गुरुजी के कमरे में गए, मी एंड डैड. गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द काउच. आई थिंक ही वाज प्लेइंग विद हिज फोन. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय मेमोरी, सो गुरुजी को भूल चुक हो जाए तो माफ कर देना. और मेरे को नहीं याद, आई थिंक करंट अफेयर्स की बात हो रही थी. द गुरुजी हैड अ वेरी कीन सेंस ऑफ ह्यूमर. बहुत बहुत मजा आता था उनकी अदाओं को देखते हुए, उनकी बातें सुनते हुए. हिज लैफ्टर वाज इन्फेक्शियस. तो उसके बाद गुरुजी के लिए नारियल पानी आया और उन्होंने एक सिप लिया और अपना ग्लास मुझे दे दिया. ही सेड, ये ले तेरा प्रसाद. So I had that nariyal pani and it was the best drink I've ever had in my life. Like I've been the world over, but ऐसा नारियल पानी ना मैंने कभी पिया था ना उसके बाद पिया है. और अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने अमृत पिया है तो मैं बहुत प्राउडली, बहुत गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैंने अपने गुरु के हाथ से अमृत पिया है. वो नारियल पानी पिया. उसके बाद गपशप चलती रही. हम गुरुजी के पास बैठे थे, उनको दबा रहे थे. And Guruji used to emit this beautiful, I don't even know roses की fragrance, but ऐसी fragrance जो it's very unique, right? उसके बाद गुरुजी ने फोन किया संतो आंटी को and he asked her in Punjabi कि की बनाया है, and she must have said something over the phone, which I know she said राजमा चावल, क्योंकि बाद में हम घर गए थे. तो ही सर, अच्छा ये बनाया है, अच्छा तो ऐसे ही 5-7 जने आ रहे हैं तो तू खाना तैयार कर ले. एंड उन्होंने फोन रख दिया. उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी मंगवाई और कर्नल जोशी को बोला कि गाड़ी निकलवाओ. हाँ, ड्राइवर गाड़ी लेकर रेडी हुआ तो गुरुजी सेड कि नहीं, मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा. सो उस टाइम हमारे ड्राइवर मिश्रा जी थे. उन्होंने गाड़ी पुल की तो पापा साथ में बैठने लग गए एंड ही सेड नहीं, तू जोशी नाल जा. So which meant कि गुरुजी sitting in our car, so मिश्रा जी sitting in the front and पीछे वाली सीट पे सिर्फ गुरुजी और मैं तो डर गई. मैंने कहा कि गुरुजी ने पापा को क्यों भेज दिया. एंड अगेन कहते हैं ना, मंद बुद्धि, समझ कम थी. और मेरे को ख्याल आने लग गया ऐसा कि पापा को भेज दिया. एंड आई वाज नर्वस जस्ट सिटिंग अलोन विद गुरुजी. बिकॉज दो वो बहुत लविंग और बहुत ही रेडियंट, उनका बहुत नूरानी चेहरा था, बट देयर वाज समथिंग अबाउट हिज ऑरा कि आप उनसे नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते थे. एटलीस्ट आई कुडंट. सो मैं बैठ गई उनके साथ. तो गुरुजी इस तरफ, मैं इस तरफ, ड्राइवर आगे और गाड़ी चल रही है. उसके बाद गुरुजी ने मेरे को कहा टू स्मेल दी एनर्जी चक्रास, डिफरेंट 10 द्वार जिसको कहते हैं, हियर पीछे, हियर बेली बटन. तो वो मुझे गुरुजी ने स्मेल करने को कहा.
और जैसे जैसे वो बोलते गए मैं करती गई, बट आई वॉज पेट्रिफाइड। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। इतने में संतो आंटी का घर आ गया, हम निकले वहां पर। वी हैड अ नाइस टाइम विद संतो आंटी, वी हैड एक्सलेंट राजमा चावल। और मेरे को ये लग रहा था ऐसे, देखो संगत परिवार की कितनी ब्यूटी है, दैट यू डोंट इवन हैव टू नो हु दे आर, यू डोंट हैव टू नो देयर लास्ट नेम, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग अबाउट देयर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यू डोंट हैव टू नो आप किसके घर जा रहे हो। द वेरी फैक्ट दैट यू नो, तो आप जय गुरु जी बोलते हो और एक नया बॉन्ड बन जाता है। And that bond, that rishta is priceless. And it's, if you look around today, across the globe, कैसे गुरुजी अपनी संगत को एक फूल माला की तरह अपने हाथों से एक एक करके पिरो रहे हैं। And the परिवार is expanding exponentially day in and day out, right? So anyway, वो रात खत्म हुई. It was a beautiful evening, and I think about that evening till date, you know, when there are times when I'm down and I'm depressed, and I hold on to those moments कि गुरुजी ने मेरे को bless किया था, probably पता नहीं किस चीज के लिए, किस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए गुरुजी ने अपनी इतनी ब्लेसिंग दी थी मेरे को one on one that day. पर ये बात हुई और मैंने घर जाके किसी को नहीं ये बताई. I kept it to myself till I think many years. I think even after Guruji left his physical form, I'd shared this incident with my parents. So, and I'm going to strictly focus on my personal satsang. So I'm not going to go into my dad's satsang or my mom's satsang or my sister's satsang. A couple years later, I developed what we call polycystic ovarian disease. And the doctors wanted to put me on some medication, hormones ke liye wo dete hain. So I was very reluctant to start taking those pills because I said, you know, oh my God, my hormones are going to get messed up. So हमारे पास एक ही रामबाण है, right? और आज तक वही है. जब भी कोई कुछ भी होती है, big or small, we run to Guruji. That's like our, you know, trump card. So I went to Guruji. I said, Guruji, वो मेरे को ना polycystic ovarian disease है. He looked at me and he said, हल्दी वाला दूध पिया कर. Simple. And मैंने फिर घर जाकर हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया. And I think I would have just had that haldi wala doodh for a couple days. And I don't know what happened to my cysts. Sare gayab ho gaye without any medication. But this is, you know, this is Guruji's way. And his ways are absolutely amazing and intriguing. And probably if you try to find any rational or logic, you will fail. So that happened. उसके बाद बीच में बहुत कुछ हुआ. You know, he got my sister married. वो उसकी शादी पे भी आए और you know, अपने हाथों से उन्होंने हमें लंगर तब सर्व करके अपने कमरे में खिलाया था. So a lot of beautiful memories with him. और मैंने गुरुजी की सेंस ऑफ ह्यूमर का जिक्र किया था. तो गुरुजी को शादियां कराने का बड़ा शौक था. तो जब मेरी MBA आई थिंक खत्म होने वाली थी, तो एनी टाइम आई वुड गो एंड डू मत्था टेक टू गुरुजी, ही वुड से बड़ी चंगी कुड़ी है, मुंडा फंसा ले, ब्याह करा ले. एंड इट यूज्ड टू बी सो एम्बैरेसिंग. और मेरे को लगता था कि हे भगवान, मैं नजर ना मिलाऊं, मैं जल्दी से दूर से मत्था टेक कर भाग जाऊं ताकि मेरे को ये ना सुनना पड़े. बिकॉज आई वुड टर्न क्रिम्सन एनी टाइम ही वुड से दिस, मुंडा फंसा ले, ब्याह करा ले. मैं तो मतलब लाल हो जाती थी बिल्कुल कि क्या बोलो. एंड उसके बाद उन्होंने एक दो बार, you know, किसी, I'm not going to name that संगत, उनके बेटे के साथ भी कि नहीं उसके साथ कर ले, you know, माला एक्सचेंज करके कर ले. And it was so embarrassing because I think that guy had a girlfriend. But Guruji would say कि आगे आने वाला, you know, समय बहुत माड़ा है, खराब है. So, you know, he would say कि उनको ये लगता था कि you know, सारी लड़कियों को सेटल करवा दूं. He was a very traditional guru. So anyway, मेरी भी शादी फिक्स हुई और you know, चंडीगढ़ में हुई. So जब रोका, you know, मेरे लॉस करना चाहते थे, so we said before we do the रोका, we would like to, you know, bring this picture back to Guruji and वो दिखाकर उनकी अप्रूवल लेकर फिर आगे बढ़ेंगे. So I brought the picture back and Guruji said, हाँ, you know, चंगा मुंडा कर ले.
सो हमारी शादी चंडीगढ़ में हुई तो गुरुजी तो नहीं आए थे, बट जब वो एक मोमेंट आता है ना when the bride is alone in the room एंड सारे नीचे बारात को देखने जाते हैं, तो मेरा रूम बिल्कुल फ्रेग्रेंस से भर गया और मेरे को लगा कि गुरुजी आए हैं. सो एनीवे दैट मोमेंट हैपेंड. उसके बाद शादी हुई. शादी के बाद हनीमून पे जाने से पहले मैं दिल्ली आई गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए. Now my husband had never met Guruji. Even when we got engaged, I had tried to tell him कि आओ darshan कर लो, but he was always very opposed to it, and he said never directly but always indirectly he would slither out of the situation कि नहीं मिलना. So anyway, शादी हो चुकी थी. I was leaving India. So I was very adamant कि गुरुजी के दर्शन किए बगैर तो this is not going to happen. So we were in Chandigarh. हमारी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात की फ्लाइट थी, and we were supposed to leave Chandigarh at 11 o'clock in the morning, but he kept delaying our departure because probably in his mind he was thinking कि हम दिल्ली लेट पहुंचेंगे तो we won't have enough time to go to Guruji. We'll just go to my parents' house, meet them for dinner, and then head out to the airport. तो वो डिले करते गए. और उस दिन आई डोंट नो क्या हुआ कि हम चंडीगढ़ से दिल्ली आई थिंक 4-4.5 घंटे में पहुंच गए. और जैसे ही हम पहुंचे, माय डैड वाज स्टैंडिंग रेडी इन द लिविंग रूम. जैसे ही हम अंदर आए, ही सेड चलो बेटा गुरुजी के चलते हैं. सो माय हस्बैंड थॉट दैट ओ माय गॉड माय प्लान फेल्ड, क्योंकि अब तो हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट. सो जब हम गए, सो ही लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड ही सेड तू मोहिंद्रू का बेटा है. And we never really got into like last names and all that with Guruji. So, but anyway, Vikram in his mind said कि हाँ मेरा नाम Vikram Mohindru है, so what's the big deal? Mohindru का ही बेटा होगा. And then Guruji looked at him. तू आना नहीं चाहता था ना, लेकिन मैंने फिर भी तेरे को बुला लिया. And होता है ना रोंगटे खड़े हो जाने, तब उसके goosebumps खड़े हुए. But anyway, that was a very brief encounter with Guruji that Vikram had. और हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली एंड वी लेफ्ट द कंट्री. नाउ आई वाज embarking upon a new phase in my life. हनीमून के बाद हम अमेरिका आ गए. और उस टाइम जैसे आज हर बात हर पल गुरुजी का जिक्र होता है, उस टाइम ऐसे नहीं होता था. और ना इतने ज्यादा सत्संग होते थे, राइट. गुरुजी का आई थिंक एनुअल सत्संग गुड़गांव में हुआ था पहली बार आई थिंक इन दिसंबर 2004 या 2005. और ये कुर्सी और टेबल जो आप पीछे देख रहे हो, ये गया था गुरुजी के लिए. सो एनीवे न्यूयॉर्क में मैं सेटल हो गई. आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड आनिया. उसके बाद मेरे को लोअर बैक में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई. L4 L5 हर्निएशन हो गया. एंड आई हैड कम टू अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई वाज इन माय अर्ली 20s, बट आई फेल्ट दैट I could not move anymore. और मैं उस फियर में रहने लगी कि मैं शायद लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो जाऊंगी और मैं चल नहीं सकूंगी. और I'm in a this foreign country with no immediate family. मेरा क्या होएगा? So पहली बार जब मेरे को ये बैक का अटैक हुआ, I was rushed to the hospital. They injected directly into my spine. तो मेरे थोड़ा सा पेन रिलीफ हुआ मेरे को. But I had not told my parents about it until date. I think I hold on to things, or I discuss things unfiltered with my best friend, which is Guru Sahib, because I feel कि parents को बता के या किसी और को भी बताकर आप क्या हासिल कर लोगे, except probably stressing them out or burdening them even more, which you don't want to. And when you have a friend for him, I don't think we should run after people anyway. So मैंने उनको बताया नहीं. दूसरी बार again when I had this back का issue and I was very nervous. That's when I told my parents. I said मेरे को ना ऐसे back pain all of a sudden हो जाती है और इतनी बुरी होती है that no Advils, no Tylenols, no medication helps. और इतनी बुरी होती है कि मैं अपने आप को restroom तक नहीं लेकर जा सकती. I am so dependent. I feel crippled. So that's when my parents went to Guruji again and गुरुजी ने ना हमें पहले एक जग दिया था when we were living together, the four of us, my mother, father, my sister and myself. गुरुजी ने हमें बड़ा सा जग मंगवाया था हमसे और हमें ब्लेस करके वो दिया था. So
जब मेरी पेन के बारे में गुरुजी से बात करी तो गुरुजी सेड कि ठीक है, मैं उसको लोटा ब्लेस करके देता हूँ और आप वो भिजवा दो. So that lota came, and Sangatji, believe you me, I would have had maybe water amrit from that for 3 days, and I don't know where my back pain went. That girl who was living in this complex ke hey Bhagwan, मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं, मैं, today I'm as normal as I can be. I get up, I dance, I do everything, and thanks to Guruji's blessing. Guruji, before शादी का एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ. This was I think the year 2000. So I would see कि संगत कई बार ना गुरुजी के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आती थी. तो मेरा भी बहुत मन करता था कि किसी स्पेशल ओकेजन पे मैं भी गुरुजी के लिए कुछ लेकर आऊंगी. और वैसे हमारी क्या औकात है कि हम गुरु साहब को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते सिवाय आई थिंक अपने हमारे प्यार और विश्वास के, और वो हमारी भावना के भूखे हैं. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक ही वांट्स टू सी इन ऑल ऑफ अस, राइट? तो एनीवे, February 12th मेरा बर्थडे होता है, तो आई ऑल्सो मस्टर्ड करेज. आई सेड चलो गुरुजी के लिए चॉकलेट्स लेकर चलते हैं. तो छुट्टी लेने से पहले मैंने गुरुजी को मत्था टेक द टाइम मैंने चॉकलेट्स का बॉक्स उनको ऑफर किया. ऐसा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ. एंड थोड़ा सा डर लग रहा था कि वो डांट ना दें कि ये क्यों लाई है या व्हाटएवर, बट he was so generous. He accepted that box from me, and he was wearing maroon juttis at that point in time. He opened his juttis. He said, "Elle chak tera prasad." And I took those juttis and I put those juttis on my head, and I still hold on to those juttis. And I've kept them, wrapped up in a cloth. Now, if you see the condition of those juttis, that prasad that I got from Guruji, those juttis have become torn and a little battered, but they still have fragrance. Now, how they became torn and how they became battered, I don't know, because they've never been used. Obviously, I don't wear them and dance around. But it just tells me that jutti prasad that Guru Maharaj gave to me on my birthday, वो जुत्ती अपने ऊपर all the कष्ट, all the obstacles, all the struggles, I think everything that this life had to put on me, वो उन जुतियों ने अपने ऊपर ले लिया है ताकि मैं protected और shielded रहूं. That's my interpretation. And that's the most valuable thing that I have in my life. और I always say कि हम लोगों ने कुछ तो ठीक किया होगा. We all must have done something right in our previous births or lifetimes, that आज हम गुरुजी की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं. पूरन गुरु बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है और हमें इतनी आसानी से मिल गया, तो हमने कुछ तो सही किया होगा, और गुरुजी का शुक्राना उस चीज के लिए. So anyway, fast forward a couple years, तो मेरी बैक इशू को गुरुजी ने ऐसे पल में ठीक कर दिया. अब क्या था कि स्टेट्स में लाइफ बड़ी फास्ट पेस होती है, एंड बीइंग अ यंग पर्सन जिसकी यहाँ कोई इमीडिएट फैमिली नहीं थी, प्लस आई बिकम अ यंग मदर, I was like getting borderline depressed because my husband was working, he was gone from morning to evening, और मेरे को लगता था मैं गाड़ी भी नहीं चलाती, मैं काम भी नहीं करती, and I have a baby full time. So and then I used to talk to my friends in India, और उन लोगों की शादी भी नहीं हुई थी, वो क्लबिंग की बातें कर रहे होते थे, मैं I used to be struggling with how to change a diaper. So बहुत एक माइल्ड सा डिप्रेशन सा होने लग गया था. प्लस ये बैक एक के एपिसोड में मेरे को लगता था कि मैं तो गुड फॉर नथिंग रह जाऊंगी, और everybody is just going to leave me and go. It was that fear, that self-inflicted fear. So I wanted to feel productive. I wanted to feel that I'm worth something, and I'm capable, and I can I too had dreams which I wanted to fulfill. So that happened. Life चलती गई. गुरुजी के तब छोटे छोटे से इतने स्वरूप मिलते थे, which we used to sort of clip here. I got pregnant with my second child, and ये 2007 की बात है. So when the baby was 10 weeks old, the child, the fetus actually lost its heartbeat,
and I had to go for a DNC. और ये है 29th May 2007 की बात. So I was like, emotionally I was very shook up. और मेरे को लग रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, because I had no problems with my firstborn, so why did this happen all of a sudden? And plus I think when you don't have your parents around, it becomes very overwhelming anyway. So ये 29th May की बात है, and I had to go in for a DNC to get that fetus removed. And I did not know what to expect. DNC में कितना पेन होता है, नहीं होता, क्या होता है. So मेरे पास क्या था, गुरुजी का वो छोटा सा स्वरूप था, तो मैंने अपने यहाँ पर वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, and I put it there. And when they asked me to change, I said नहीं, मैं अपने गाउन के साथ ये पिक्चर यहीं लगाऊंगी, so please leave it because this is my God, I believe in him. So anyways, they put me to sleep. They did the DNC. और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मतलब कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं. मेरे को लग रहा था कि पता नहीं, आई डोंट नो इसमें कितना रेस्ट चाहिए होगा, क्या होगा, बट एज इफ कोई पेन मुझे छू कर भी नहीं गई हो. So 29th May को वो बात हुई, और my parents were obviously on the phone. My in-laws would call, they would check on me. So 30th को मेरे mom dad का phone आया. 31st को किसी का phone नहीं आया मेरे को. And I was very disturbed. I was like, abhi to ek din pehle, I've gone through something so big. Why are my parents not calling me and checking on me? So then I called them. I called them 31st morning, which was 31st evening in India. And when I called, my mom picked up the phone and she was crying. And my instant reaction was, kya hua papa ko? So she said, Guruji nahi rahe. And it was a shock. Like, I also started crying. My mom's crying on the phone. I'm crying on the phone. और ऐसा लग रहा था कि जो सारी सृष्टि को लाइफ देता है, वो कैसे चले गए. And it was very hard to accept. Till date, this is like the saddest moment of my life when I heard this news that our Guruji is no more amongst us. And that's why, my parents did not call me that day, because everybody was so shook up. We all felt so orphaned. But little did we realize that Guruji is leaving a message for all of us that we are mere mortals. Jo aaya hai, is दुनिया में उसको जाना है. None of us, अब गुरुजी के पास हम आए हैं, इसका ये नहीं मतलब हम अमर हो गए हैं. We all have an expiration date. And if Guruji himself left his physical form, so that's just a perspective that the only truth, the only certainty in this life is that one day we all will perish. तो हम किस चीज के पीछे भागते हैं, किस rat race में हम लगे हुए हैं. It was an eye opener. And then I think while Guruji was in his physical form, there was a lot of limitation. वो संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. किसी को सर दर्द है तो गुरुजी को सर दर्द हो जाता था. किसी का ब्लैक मैजिक वो अपने ऊपर लेते थे तो गुरुजी के हाथ पांव काले हो जाते थे. किसी का कैंसर वो अपने ऊपर लेते थे तो गुरुजी खून की उल्टियां करते थे. सो वो शारीरिक कष्ट से गुरुजी मुक्त हो गए थे, और निराकार होकर उनकी ताकत और भी दुगनी तिगनी चौगनी मैनी फोल्ड बढ़ गई थी. एंड गुरुजी वुड ऑलवेज से, जो हमें समझ नहीं आई उस टाइम पे, कि देखते रहना, लाइनें लग जाएंगी, मेरे जाने के बाद लाइनें लग जाएंगी. और हमारी छोटी सी अकल में ऐसे लगता था कि अभी 50 लोग बैठे हैं, 50 के 100 हो जाएंगे, 100 के 500 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, और क्या होएगा. एंड आज, नीडलेस टू से, यू एंड आई, ऑल ऑफ अस सी कि लाइनें लगने का क्या मतलब है. सो दैट हैपेंड. दिस वाज इन 2007. उसके बाद I conceived again in 2009, and I gave birth to my second daughter, a healthy baby, Amira. And we had moved to California. California se we had moved back to New Jersey. Ab jab, second baby ho gaya, by the time it was 2010, तो यहाँ पर tri-state area में, New York, New Jersey में, थोड़े सत्संग होने शुरू हुए थे गुरुजी के. So when Amira was just 40 days old, तो मैं यहाँ लॉन्ग आइलैंड में मीरा आंटी के घर सत्संग पे गई थी. और संगत थोड़ी थोड़ी जुड़नी शुरू हो गई थी. तो ऐसा लगता था कि वाओ, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया के बाहर हम अमेरिका में गुरु महाराज को बैठकर याद करेंगे, और उनकी फॉलोइंग आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ती जाएगी. तो सत्संग होने शुरू हो गए. और 2011 में, so when we had moved back to New Jersey, my husband had acquired, a business in New Jersey, a couple cell phone stores, and I wasn't working. So 2011 May something happened and he lost, all the stores like overnight. So for pretty much for 14 months, imagine living in the States and we did not have any source of income, nothing, not a dime. And I'm not ashamed to share this with you all because this is nothing but reality. And I had seen that time when, my daughter was going to school and she would ask me for $10 and I could not even give that to her because that's how tight we were. But surprisingly, we were still in the same house. We kept driving the same cars. I don't know how. And people would, around me would come and ask me, oh my God, you always radiate so much happiness and so much positivity. How do you do that? और मैं अंदर से रो रही होती थी और मेरे को लगता था कि wow, Guruji, you're keeping this beautiful facade on me that, despite the most troubled times in my life, I'm able to emit and radiate so much positivity for the others. And this is not me. This is clearly you. So that happened. And I think in 2012, 2012 March 18th, गुरुजी सपने में आते हैं. और उससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रेशर सा बढ़ना शुरू हो गया था, संगत बढ़नी शुरू हो गई थी. एंड बिकॉज आई वॉज प्रीटी मच द ओनली पर्सन अराउंड इन न्यू जर्सी हु हैड मेट गुरुजी. सो पीपल हैड स्टार्टेड आस्किंग कि आप सत्संग क्यों नहीं करते, आप अपने घर में सत्संग करो, आप अपने घर में सत्संग करो. एंड माई सिंपल आंसर यूज्ड टू बी, मैं जरूर करूंगी. अभी वन, माई किड्स आर रियली स्मॉल, माई लिटिल वन वाज नॉट इवन 2. एंड दूसरा, जब गुरु साहिब हुक्म करेंगे तो मैं सत्संग जरूर करूंगी. सो 18 मार्च को गुरुजी का सपना आता है और बड़ा क्लियरली वो दिखाते हैं कि वो घर में, ही इज पेसिंग इन द लिविंग रूम ऑफ द हाउस. ही शोज द चोला ही इज वेयरिंग, ब्लैक एंड रेड. संगत बैठी हुई है. वो लंगर की थाली भी दिखाते हैं, उसका मेन्यू भी दिखाते हैं. साग था, पनीर था, मक्की की रोटी थी. और सपने में वो डेट आकर देते हैं 19th May 2012 की बात है ये. तो ये सुबह सुबह का सपना था, वेरी अर्ली मॉर्निंग. तो माई फोन वॉज बाय माई बेड साइड. सो आई वेक अप एंड आई रीच आउट फॉर माई फोन एंड आई वाज लाइक, कहीं ये 19th में कहीं मंडे ट्यूसडे का दिन तो नहीं दे दिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वीकेंड्स को लोग आते हैं. वीक डेज लाइक एवरीबडी सो बिजी. सो आई सी इट्स अ सैटरडे. आई वाज लाइक, वाओ, गुरुजी ने बहुत अच्छा दिन चुन कर दिया है. सो दैट मॉर्निंग व्हेन माई हस्बैंड वोक अप, आई सेड, ऐसे ऐसे गुरुजी का सपना आया है और सत्संग करना है. उन्होंने मेन्यू भी बताया और डेट भी बताया है. And now the only thing was that we were going through that lean phase. सत्संग भी उन्होंने तब करने को कहा जब literally, किसी चीज के भी पैसे नहीं थे. So anyways, and I'm a big believer कि करने कराने वाले हमेशा गुरुजी होते हैं. हम इंसान तो बस फालतू का क्रेडिट हमें मिल जाता है, but trust me, we are his mere puppets. He's the doer and he's pulling the strings and he's connecting the dots and he's making things happen. Just always remember that. So he said, पहली बार हम सत्संग कर रहे हैं तो about 80 लोग तो हो जाएंगे. We were living in a townhouse at that point in time. तो मैं क्लब हाउस बुक कर देता हूँ क्योंकि लिविंग रूम में इतने लोग नहीं फिट आएंगे और मे में थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है. So it's going to become very cramped. So I said no, but I saw Guruji in this house, so satsang should happen in the house. But anyway, he disregarded what I said. And he called the clubhouse, and sure enough, the clubhouse said, sorry sir, 19th May, there's already an event. That date, it's not available. So we were back to square one. There was no choice but to do the satsang at home. Now I was struggling, through a lot of things because पहला सत्संग था. I wanted to do it right. I wanted to do it, होता ना शौक से करना. और मेरे को था कि मैं इंडिया से दाल का हलवा मंगवाऊं, वो क्या चकली या वो whatever इंडिया में जो स्नैक मिलता है वो संगत को खिलाऊं. पर ये सब कैसे होएगा? So again, Guruji, gives you the thought. So I called this uncle, Anurag Maini uncle. He used to, he was making trips back and forth between India and US back in 2011. So I said, uncle, आप अगली बार कब आ रहे हो यहाँ पर? He said, oh, मेरी कॉन्फ्रेंस है 21st May की,
तो मैंने अभी सीट नहीं कराई, तो पर मेरे को उसके लिए न्यू जर्सी आना है. I was like, wow. I was like, uncle, do you think, it's a weekend, 19th May is a weekend. Do you think you can come on Saturday? And he said, yeah, no problem. I'll come straight to Newark. Newark United की flight आती है into Newark early morning. तो मैं वो flight लेकर आ जाऊंगा. And I said, fantastic. And everything that I wanted to serve to Guruji, the dal ka halwa, that chakli, I called up my parents. I said, ये सामान अनुराग अंकल के हाथ भेजना है. वो 19 को ही पहुंच रहे हैं. 19 को ही सत्संग है. तो ये संगत में हम बांटेंगे. And that became possible. दूसरा जो उन्होंने मेन्यू दिखाया था, पनीर was easy. The only thing I was struggling was with साग and मक्की की रोटी. अब साग और मक्की की रोटी तो कभी नहीं बनाई थी. ये कैसे बनाओ? And I was telling Guruji, ऐसा गुरुजी दाल मखनी वगैरह नहीं दिखा सकते थे कुछ. Why साग? So I called up an auntie, Rashmi auntie. She said, बेटा साग हरा होता है. हरा means prosperity. Maybe, Guruji is trying to change something for you. So anyway, मैं जब साग लेने गई, मेरे को साग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्या क्वांटिटी, साग में क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, नथिंग. सो आई वॉक्ड इनटू द स्टोर इन लॉन्ग आइलैंड एंड आई सेड, भैया मेरे को साग बनाना है 80 लोगों के लिए. एंड दैट द दुकान वाला इज लुकिंग एट मी कि एलियन कहाँ से आया, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. So then I said, how much broccoli, how much spinach, how much sarson ka saag, how many bunches will I need? And he takes me to the back and he literally hands over boxes to me. जैसे वो गाय भैंस का चारा नहीं होता. He said, ये लो, आप ये ले जाओ मैडम, 80 से 100 लोगों को अगर खिलाना है तो ये बना लेना. So anyway, वो बॉक्सेस भरकर हम 18th रात को आ गए. उसके बाद रात भर बैठकर साग को चुन रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ये करें वो करें. 19th को एज इट इज अनुराग अंकल को लेने जाना था अर्ली मॉर्निंग, लाइक एट 4:30. सो माई हस्बैंड वेंट और हमने सुबह सुबह साग चढ़ा दिया. किसी को रेसिपी का कोई अंदाजा नहीं. और बैक इन 2012 इतना यूट्यूब wasn't that big कि तुम यूट्यूब को रेफरेंस कर सको. तो हमने साग बनाना शुरू किया, हिलाते गए, मक्खन डालते गए और इतना फ्लेवर उस साग में. लाइक उसके बाद मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार साग बनाया, वो भी सत्संग के लिए. बट आई नो दैट इट वाज गुरु साहिब्स हैंड. और मक्की की रोटी का आपको सत्संग बताती हूँ. एंड आंटी गेट्स अ ड्रीम, ताज आंटी, कि गुरुजी उनको सपने में आके कहते हैं कि तू और रश्मि 100 या 150 मक्की की रोटी बना लेना सत्संग के लिए. सो विदाउट मी हैविंग टू टेल देम कि somebody should help me, or having to buy, because I did not even have the means to buy it back then. कैसे गुरुजी ने एक चीज लाइन अप कर दी फॉर द सत्संग इज इनक्रेडिबल. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट सत्संग हैपेंड, राइट, इन 2012. उसके बाद जुलाई ऑफ दैट ईयर, सत्संग हुआ मई में, जुलाई में गुरुजी का फिर सपना आता है एंड ही सेज दैट एक बार बीच में आया था, बिकॉज रात को नींद नहीं आती थी, इतना स्ट्रेस था. ऐसा लगता था कि हाउ विल वी बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि कोई एंड डेट कोई साइट में नजर नहीं आती थी. देयर वाज नथिंग रीअश्योरिंग दैट वाज हैपनिंग. तो ऐसे मन में एक प्रेशर रहता था कि गुरुजी ये टाइम्स कब खत्म होंगे. सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. और एक बार गुरुजी आई स्टिल रिमेंबर सपने में आते हैं. गुरुजी का सपना इज नॉट सपना. हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी का सपना देख सकें. जब गुरुजी आते हैं, दैट्स एक्चुअली योर गुरु साहिब टॉकिंग टू यू डायरेक्टली. सो ही सेड, कमली तू क्यों फिक्र करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझसे पहले किसी के साथ नहीं हुई या तेरे बाद किसी के साथ नहीं होगी. और ये तो हमारा कर्म है. 90% मैं खुद पे लेता हूं, तुम लोग 10% पे इतना तड़प जाते हो. And I was like, wow, yeah, that's true. I'm complaining, I'm bickering, I'm struggling through so much. And and satsangs don't have to always be happily ever after. Satsang is your journey. Good, bad, highs, lows, ups and downs. That's your satsang. So, that thought, that message was very reassuring. कि Guruji कह रहे हैं कि 90% he's taking on himself. It's just the 10% that we need to endure. So what are we bickering about? So that happened, and then July में गुरुजी का सपना आता है कि my husband had started to interview for this one company in Manhattan. Now let me tell you, once you've had your own businesses, the mindset becomes very different, because
you're your own boss, and then if you want to get relaunched into the corporate America, you want to get relaunched at a certain level. So he was being very picky, and certain positions, vice president and up, usually networking ke through milti hai. And being out of the job force for so long, it was highly unlikely. But anyway, so LinkedIn ke through your opportunity thi, and he was in the interview phases. So sapna aata hai that Guruji said कि शनि देव बहुत नाराज था विक्रम से, पर मैंने उसकी फाइल निकलवाई है, और I really had to fight with शनि देव, but अब सब ठीक हो जाएगा. So when I got that dream, I was like, wow, iska matlab, whatever he is pursuing, probably usko mil jayega. So I told him this. I was like, bhai, kaisa aisa sapna aaya? And this is what Guruji said. So he said, हाँ चलो देखते हैं, अभी तो बहुत rounds बाकी हैं, blah blah blah. उसके बाद in the meantime, मेरे को भी था that I should, I've not been working for so long. The last I'd worked in India was in 2003 with Siemens, and then when I was getting married, I'd quit my job. But I did have my education, I did have my qualifications, so why not get relaunched into corporate America? So I would leave my little girls. One was 7, the other was 2. The 2-year-old would go to a daycare, and I started taking classes in Princeton. I was in North Jersey. Princeton was almost Central Jersey. I would drive every day, take classes to sort of get myself launched into the IT field. So anyway, मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म करी. उसके बाद इंटरव्यू का, जो मेरे भी इंटरव्यू का मौका आया, तो that morning again I see Guru Sahib, and he's walking at this beautiful lush green campus जो मैंने कभी पहले देखा नहीं था, और गुरुजी सिर्फ वहां चक्कर लगा रहे हैं, वो मेरे को वो कैंपस दिखता है, and that's it. So anyways, my interview was with Express Scripts in New Jersey, in Franklin Lakes. So I go there, and it's a beautiful campus, and when I reach that place, I was like, wow, यही तो गुरुजी ने आज सपने में दिखाई थी, इसका मतलब मेरे को ये जॉब मिल जाएगी. So मैं वहाँ interview देती हूँ. For 45 minutes, the interview goes on, and it was like, oh, okay, sorts, because it was my first job, experience था नहीं. But anyway, 45 minutes interview चलता रहा. But because of that dream, I kept thinking कि शायद मुझे ये job मिल जाएगी. So interview के बाद, when we came back, people started asking कि, कैसा रहा interview, ये वो. And very confidently, I started telling them, I'm trying to, apply for a position of a business analyst. I think मुझे मिल जाएगी. 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए. I did not hear back. And that's when Vikram said to me, he said, ऐसा नहीं होता, तुम्हें recruitment का idea नहीं है. If they're looking to fill a position, you would have probably heard from them by now, so you did not get it. But मेरे mind में था कि मैंने वो campus देखा है, तो नौकरी तो मुझे वही मिलेगी. उसके बाद 3 weeks later, I get another call from Express Scripts for a completely different position and a different team. And वो phone पे I think 10 minutes का interview होता है, and they just offer me the job right then. I was like, wow, that explains it. कि, maybe the first one did not come through, but I got the second offer, and I started working October of 2012. And yes, in the meantime, my husband had also gotten the other job in the city. So we sort of got a fresh start in our lives. And, after that ordeal of 14 months with no income, we were back on track. Now, how Guruji, does hand-holding, and how every step of the way he started to advance my career. So my Guru is that little voice that speaks in my mind, that constantly pushes me, that constantly motivates me. When I'm down on my knees, when I feel that I'm in the middle of a storm, he's that little voice in my ear that tells me, Aarti, keep going, don't give up. So Shukrana, to my Guru for being that guiding force, that guiding light in my life. So job शुरू कर दी, उसके बाद business analyst का role तो मिल गया, लेकिन आता तो कुछ भी नहीं था. And I knew that if somebody gives me a technical document to write, I will miserably fail because I don't have the skill set for that. उसी साल Sandy आता है. New Jersey, New York was impacted by this storm called Sandy. So for 6 to 8 weeks, offices are shut down. I'm getting my paycheck without having to work. I don't even have a laptop to work on because the Sandy thing, knocked out everything.
So तनख्वाह मिल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं करना पड़ रहा. उसके बाद ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक टाइम निकल गया. 31st December 2012, हाँ 2012 को we had to work this command center. So 31st and 1st की दोनों दिन काम करना पड़ा था. And that's where I met this senior director at Express Scripts, who gave me this offer to be on his team, more like a project manager, so which meant that I will not have to write technical documents. तो वही गुरुजी ने वही career trajectory को यहाँ से एकदम यहाँ कर दिया था. And because it was an offer from a senior director at Express Scripts, I was a subcontractor through Cognizant. Cognizant offered me a full-time employee job without an interview. So you see how the pieces are moving. It's unreal. Like I myself couldn't fathom कि ये हो क्या रहा है. As if he was like literally he'd taken the control of the steering wheel and he was just steering it along. So that happened. So I because I got a full-time employee job, so my salary was almost like 50% increase हो गई. Without experience, वही मैं एक meeting के बाद, because that senior director wanted me on his team, 50% pay increase, full-time employment with Cognizant. उसके बाद ये ख्याल आया that because I've taken up a role of a project manager, I should probably do something to advance my certifications. So I decided to sign up for a PMP exam, which is called Project Management Professional. Now, get the door if you need to. I signed up for that. Now, I did not even have the right amount of work X to take the exam. मतलब 5 साल या 3 साल आपको project management में रहना पड़ता है before you can even take that certification. So, I'm still doing my satsang. You can sit here. वो हुआ, I signed up for that, and first attempt में, I got that certification. Or this was like totally, Guruji's way of, just pushing me ahead. That happened. उसके बाद घर लेने की जब बारी आई, so we were renting that town home, and we wanted to close on that home end of 2013. My husband is a little थोड़ा सा वहमी टाइप का है. He believes that जब सब कुछ हो जाता है तभी उसके बारे में बात करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए. And मैं गुरुजी के साथ रह के बिल्कुल भी वहम नहीं करती. मेरे को है कि अगर होना है, गुरुजी ने खुद करवाना है, तो वहम किस चीज का. So जब closing date थी, उसके एक हफ्ते पहले we realized that we are about, I think, close to $12,000 short on the amount. और मैंने as usual सबको बताना शुरू कर दिया था that we are buying this house, we are buying this house. और he started getting frustrated that do you even realize that we are X amount short, और तुम हर जगह ढिंढोरा पीट रही हो. Believe you me, 2 days before the closing date, I get a direct ACH into my account from my company with that exact dollar amount that we were short of. I don't know how that wire transfer came in, why that wire transfer came in, but Guruji again made the closing possible. So we got our first house. Now I'm going to fast forward a little quickly. The current house जो आप अभी देख रहे हो, 2014 में हमने ये भी खरीद लिया. और उसका भी सत्संग कैसे कि गुरुजी ने ये घर मेरे हस्बैंड को सपने में दिखाया था. But we didn't know where this house was. There was no location. So I see this house on realtor.com, and मैंने realtor के साथ appointment fix कर दी कि हम ये घर देखने आ रहे हैं. So when I told him this house is in Monroe, he said absolutely not. We were in Nutley back then, which was close to the city. He said this is going to be too far. Who's going to go to Monroe? I was like, नहीं, ये घर बहुत सुंदर है. It's a dream house. We should just go and see it anyway. So हम जाकर देखते हैं. When he comes to the house, he's like, oh my God, ये तो वही घर है जो मैंने सपने में देखा था. With this brick front, and as you enter, right side पे formal living room है जिसको हम गुरुजी का मंदिर बनाएंगे. So anyway, it was a no-brainer. वो घर भी हो गया. और ये गुरुजी का दिया हुआ घर है. In fact, this chair and table we got airlifted on Thanksgiving. It was brought to us
real quick satsang on this as well. So back in 2007, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था और annual satsang गुड़गांव में फिर भी होता था, and it's still going on an annual basis, which is great. So Commander Sharma had called my dad that ये कुर्सी और टेबल आप हमें दे दो, because गुरुजी इस पे बैठते थे, and now that Guruji is not there anymore, we still want to continue using this for him. And मेरे डैड से कभी इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होती. I don't know how he mentioned it to me that day. 2007 की मैं आपको बात बता रही हूँ. And when he said this, he said मैं सोच रहा हूँ कि मैं दे दूँ. And I don't know what came to my mind. I said नहीं पापा, ये कुर्सी और टेबल आप मत देना, ये गुरुजी का दरबार मैं अपने घर में बनाऊंगी, ये कुर्सी और टेबल वहां आएगा. अब 2007 में जब हम छोटे से घर में रह रहे थे और हमारे पास खुद रहने की जगह नहीं थी, who could have imagined that 7 years later on Thanksgiving in 2014 November, this kursi and table did come to Guruji's darbar. And that's what we say, patience, shraddha, saburi, ये चाहिए हमें गुरुजी के साथ. ये 2014 की बात. Satsangs are like endless. I don't believe, I've been talking non-stop for over an hour and I still feel that अभी तो, मैंने iceberg का, surface भी scratch नहीं किया, and I can go on and on and on. What I'm going to leave you with is that, again, no coincidence in his darbar. He finds your soul and invites you to be part of his clan when the time is right. However, it depends on us what we make out of this. गुरुजी के पास आए हो तो हमारे ऊपर है कि हम एक चम्मच लेकर जा रहे हैं, इसमें से एक बाल्टी लेकर जा रहे हैं, या कंप्लीटली डूब जाते हैं उनकी कृपा में, वो हम पे निर्भर करता है. तो हमें क्या करना है कि हमें अपना एंटेना बाहर निकालकर, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स एंड लॉजिक्स एंड डाउट्स एंड सस्पिशन, अपनी रूह को गुरुजी के साथ कनेक्ट करना है. एंड बिलीव यू मी, गुरुजी हमारे अंग संग हैं. अगर आप उनकी आवाज सुनना चाहो तो वो आपसे हर बार बात कर रहे होते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्यूनिंग इनटू दैट फ्रीक्वेंसी. एंड जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो ये जरूर एक बार टटोल लो कि क्या आपकी नीयत बियॉन्ड दैट एक्शन, आपकी नीयत सही है. सो लाइक दे से, इंटेंशन मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन. सो अगर आपकी नीयत प्योर है, सो गुरुजी आपके साथ हमेशा अंग संग रहेंगे. I actually have somebody else from Sangat Parivaar here, which, she's here to talk to me. So I will have to cut it short. I can go on and on, but I will save more satsangs for part 2. Stay connected, stay blessed, and stay under his fold. Shukrana Guruji. Jai Guruji.